गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारे साथ साउथ से एक डॉक्टर है। जैसे कि उन्होंने बताया है कि देयर पूरे इंडिया में ही फैला हुआ है, यहाँ तक कि कुछ फॉरेन कंट्रीज भी, अब्रॉड से भी हमारे पास कुछ कंट्रीज से डॉक्टर्स हैं, होम्योपैथ्स हैं। तो आज साउथ से आंध्र प्रदेश से है डॉक्टर MSR शास्त्री, सीनियर डॉक्टर हैं। जब हम अप्रोच कर रहे थे साउथ के डॉक्टर से, तो बहुत सारे डॉक्टर्स ने बोला कि आप हमारे मेंटोर डॉक्टर शास्त्री से अप्रोच कीजिए कि वो बेहतरीन गाइड कर सकते हैं। तो सर को हमने टाइम लिया, तो सर ने दिया भी टाइम। थैंक यू सर, जूम सेशन के लिए आपने यस थैंक यू बोला। थैंक ये हमारे लिए भी एक ऑनर है कि आप एक ही बार में मान गए आने के लिए। थैंक यू थैंक यू सो मच सर। तो तो टाइम नहीं वेस्ट कर रहे सर, आप स्टार्ट कीजिए। हाँ थैंक यू। सो आज हम डिस्कस करते हैं deficiency disorders of the nervous system. Mainly nervous system will be affected with the water soluble vitamins than fat soluble vitamins. So water soluble vitamins जो आता है B1 B3 B5 B6 and B12, इनमें से हमारे प्रैक्टिस में हम फेस करते हैं B1 और B12 डिफिशियंसी को ज्यादा से ज्यादा। ये दोनों विटामिन डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स हमको फेस करना पड़ता है ज्यादा से ज्यादा। B3 B5 B6 इतना ज्यादा अ, हम नहीं फेस करते। ये तो रेयर डिसऑर्डर्स होते हैं B3 B5 B6 को। B1 और B12 तो ज्यादा से ज्यादा। और B1 इज नथिंग बट थाइमिन और न्यूरॉन कहते हैं इसको B1। सो B1 तो प्रॉब्लम्स तो जो आता है वहां से न्यूट्रिशनल पॉलीएंसेफेलोपैथी, दो टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स आते हैं। वो तो न्यूट्रिशनल पॉलीएंसेफेलोपैथी एंड वेर्निक्स कोर्सकॉफ सिंड्रोम सेकंड वन है। So Wernicke-Korsakoff syndrome is syndrome, and it comprises two types of disorders: Wernicke's encephalopathy and Korsakoff's साइकोसिस। सो मेंटल डिसऑर्डर्स जो होते हैं ना, कोर्सकॉफ साइकोसिस में आता है। और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स विल बी इन वेर्निक्स मैन एनसेफेलोपैथी। एंड पहले मैं बताया न्यूट्रिशनल पॉली न्यूराइटिस और पॉली न्यूरोपैथी। न्यूट्रिशनल पॉली न्यूरोपैथी विटामिन B1 से आता है। वो तो क्या आता है कि कैसे आता है कि ब्रेस्ट मिल्क जो होता है ना, और फीडिंग करते हैं बेबीज को, वो जो वेजिटेरियंस होते हैं B12 एंड B1, वेजिटेरियंस ज्यादा वेजिटेरियंस खाते हैं, नॉनवेज नहीं खाते, उनमें कम पड़ता है। Our nutritional polyneuropathy is neuritic disorder. It is nothing but neuritis symptoms ज्यादा होते हैं। neuritis तो पेशेंट्स उनके मन में जो होते हैं वो बताते हैं। वो तो डेफिशिएंसी डाइट में आता है, डाइट से। और वेर्निक्स कोर्स का सिंड्रोम में वो सिंड्रोम तो वेर्निक्स एन्सेफेलोपैथी। Wernicke's encephalopathy is having triad. One is actually ophthalmoplegia and ataxia and confusion. ऑप्थाल्मोप्लेजिया B1 से आता है। वो तो आइस का क्या है कि आइस डिसऑर्डर ज्यादा होते हैं उसमें। उनमें फर्स्ट हमको आते हैं ना केसेस निस्टैग्मस, दैट इज विजुअल डिस्टरबेंसेस विथ निस्टैग्मस। एंड इनमें जो आता है थर्ड एंड सिक्स्थ क्रेनियल नर्व्स जो आता है ना, वो पालसी में रहता है ज्यादा से ज्यादा। पालसी में B1 डेफिशिएंसी से थर्ड एंड फिफ्थ क्रेनियल नर्व्स। एंड गेज पालसीज तो आता है। एंड अकेशनली टोसिस आता है। टोसिस माने आईलिड ड्रूप ऑन टोसिस, उसमें आता है B1 डेफिशिएंसी से आता है। B1 deficiency, along with neurological deficits, it is also having affinity over cardiac muscle and cardiac circulation even. So हमको आते ज्यादा पेशेंट्स आते हमको पैदल चलने में और सीढ़े चढ़ने में ऐसा पसीना आता है। और क्या है कि हमको अपना कहते हैं ब्रेथलेसनेस, वो ब्रेथलेसनेस होता है ना, उनमें हम क्या समझते हैं कि हार्ट ब्लॉक्स
और हार्ट अटैक्स और लिपिड प्रोफाइल का कुछ अलग हमको मालूम मालूम आता है, मन में सोच आता है। इसके अलावा हमको B1 के बारे में सोचना ही पड़ेगा। B1 विटामिन तो कार्डियक कीड़ीमा आने के लिए चांसेस है B1 डिफिशियंसी में। कार्डियक कीड़ीमा वो तो कहते हैं कार्डियक बेरिबरी। ये तो न्यूरेटिक बेरिबरी है। हम क्या डिस्कस करने हैं, न्यूरेटिक बेरिबरी। न्यूरेटिक बेरिबरी में भी जो स्किन सिम्टम्स ज्यादा होते हैं और ऑप्थाल्मिक प्रोसेस के बिना और टू प्रॉब्लम्स है ट्रेड में, वो तो एटैक्सिया, गेट डिफरेंसेस आते हैं, व्हाट इज कॉल्ड थाइमिन, वाटर सॉल्युबल थाइमिन से गेट डिफरेंसेस आता है। गेट डिफरेंस में अच्छी तरह वॉक करना तो उसको मुश्किल होता है। और थर्ड वन इज कंफ्यूजन, कंफ्यूजन ऑफ ब्रेन। दिस कंफ्यूजन इज आल्सो टू टाइप्स। one is pertaining to mind, another one is neuropathological. Mind actually have early stages of disorientation. Disorientation माने वो कुछ को लिंक करना, कुछ को बताना, कुछ साफ साफ बताना, उनको ओरिएंटेशन करना और बताना और उसको लिंक करना भी उसको मुश्किल होता है, डिसोरिएंटेशन। और B1 डेफिशिएंसी में हमको वो तो समझना अच्छी तरह नहीं करता है। क्या है कि अंडरस्टैंडिंग इज इम्प्रॉपर, इन अंग्रेजी में कहते हैं हमको। ये तो पहली सेशन है, जूम में भी पहला सेशन है हमको। कोई मत समझना, कोई बुरा मत समझना। हमको इंग्लिश और हिंदी यहाँ पे कुछ कम थोड़ा थोड़ा चलता है। ओके, नहीं सर, राइट। समझ आ रहा है, और समझ आ रहा है इन सर, मन में, समझ आ रहा है लेकिन। ओके, माइंड में, थैंक यू मैम। अर्ली चेंजेस होते हैं ना, डिसोरिएंटेशन और बाद में ड्राउजीनेस होते हैं, ड्राउजी होते हैं हमको। क्या है कि ड्राउजीनेस ऐसा नक्स मास्केट में होता है, ऐसा नहीं होता। उनको डल लगते हैं, वो तो अच्छी तरह कम्युनिकेशन नहीं करते। हम बताते हैं ना, क्या नाम है तेरा, ऐसा गैप देके वो तो बताता है। गैप देना उसको मालूम होना तो कुछ देर लगता है। कैसे हम व्हाट्सएप में कॉल करते हैं ना, दूर प्रदेश से हो तो हमको कैसे मिलता है, कुछ समय देके ऐसा उनसे आंसर होता है। ये तो B1 विटामिन डेफिशिएंसी है। ऑल पैरामीटर्स विल बी नॉर्मल इफ वी एक्चुअली सेंड हिम टू द व्हाट इज कॉल्ड ब्लड टेस्ट। ओनली B1 डेफिशिएंसी होता है खून में। और इसके साथ साथ टर्मिनल स्टेजेस को वो ड्राउजीनेस कंटिन्यू करने से टर्मिनल स्टेजेस में कॉमा आता है, B1 कॉमा बेरबेरिक कॉमा आता है। और इसके अलावा न्यूरोपैथोलॉजिकल कंडीशंस, द सेकंड पार्ट ऑफ कंफ्यूजन, न्यूरोपैथोलॉजिकल कंडीशंस, लेजन्स लाइक petechial hemorrhages in gray matter of nervous system that is actually present around the third ventricle and fourth ventricle and aqueduct of Sylvius, including the mammillary bodies. So brain में इसका effect होता है, especially B1 affects the gray matter, whereas डिस्कस करते हैं बाद में वो तो B12, ये तो व्हाइट मैटर को ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम देता है। ग्रे मैटर देने वाला ग्रे मैटर प्रॉब्लम देने वाला बी विटामिन होता है। ओके। और नेक्स्ट कोर्स ऑफ साइकोसिस, दैट इज रिगार्डिंग वेनिक्स एन्सेफेलोपैथी। द सेकंड वन इज कोर्स ऑफ साइकोसिस। इसमें माइंड सिम्टम्स और न्यूरोपैथोलॉजिकल सिम्टम्स भी होता है। माइंड सिम्टम्स में इट इज मैक्सिमम एक्सटेंट देन वेनिक्स एन्सेफेलोपैथी। So, in severe forms, patients actually goes to confabulation. There, he cannot correctly tell his problems. That means what is called, we will find in stramonium, stammering speech. Stammering पहले वो तो बताने के लिए he utters for actually pronunciation. He takes some time like that.
In B1 vitamin deficiency also, in course of psychosis, mind symptoms, they will have low actually expression और वो साउंड नहीं आता है मन में से भी और मुंह में से भी हमको वो साउंड अच्छी तरह प्रोनाउंसिएशन नहीं करता है. He takes time, and it is a severe form than actually Wernicke encephalopathy. And in severe forms of confabulation, the loss of short term memory भी आता है. वो तो क्या बताना है, वो तो मालूम नहीं पड़ता है उसको, वो भूल जाता है. क्या वो तो ध्यान आए, वो भूल जाता है. That is regarding Korsakoff psychosis. And the next vitamin is B3, nicotinic acid. Its deficiency, it is mental confusion rather. इसमें sometimes mental confusion से वो बताना साफ साफ बताता है, क्या बताता है वो forget होता है. इससे confusion, always he feels confusion. With that he gets fits. That means epilepsy. एपिलेप्सी आने के लिए चांसेस ज्यादा है B3 से. और हमको कुछ ड्रग्स है इसमें डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स में मेंटल कंफ्यूजन से. वो तो सिकुटा विरोजा, where there is manifestation of what is called worm infestation. With that, patient moves like anything, moves around, and he gets and he thoughts, he thinks, he goes that goes to actually what is called epileptic spells. There, we should not take him as true epileptic, but the confusion state also. He forgets everything what he actually having, but only for some time. It actually comes into mind immediately. That is transient epilepsy, what we call, or petit mal convulsions. In petit mal convulsions, actually the B3 deficiency you have to see. And the next factor is mental confusion, sometimes fits, peripheral neuritic manifestations, or spinal cord lesions, जो आता है SSPE, subacute sclerotic panencephalitis. What we find in syringomyelia or demyelination changes, especially within the स्पाइनल कॉर्ड. सो स्पाइनल कॉर्ड ग्रे मैटर जो इफेक्ट होता है ना, इससे B1 से, ऐसा भी B3 से भी होता है, बट इतना ज्यादा नहीं होता. बट इंटरनल ऑर्गन्स गो इनटू degeneration internally. So in X-ray, what we will find is gaps, like air gaps. We will find in some circumstances air gaps कहते हैं ना, वो तो एक्सरे में होता है. तो B3 से होता है. Then next vitamin is pantothenic acid or B6. It is a very important remedy. इससे common symptom जो होता है पहला का, it's a deficiency disorder. But as far as neurological deficiency is concerned, it is mainly responsible for the burning feet. That means जलन तो ज्यादा होता है पैर में, और पाँव में भी होता है, इतना ज्यादा मत होता. पैंटोथेनिक एसिड से it is and there is what is called the burning is nothing but a syndrome. It is associated with so many factors. Burning, that means there is tingling and cramps rather, on and off they will come along with that one. Burning होता है. Burning, इतना burning जो आता है वो तो B12 में भी आता है, but B12 dominates the B5 pantothenic acid. And this discomfort in feet in absence of objective sensory alteration or motor or tendon reflex signs. So this actually affects in medical terminology के बिना साफ साफ बताता हूँ. जर्क्स जो हम करते हैं, बाइसेप्स जर्क्स, ट्राइसेप्स जर्क्स, एंड इसके अलावा क्या है कि वो तो नी जर्क्स. इसमें क्या है कि इधर हाइपर एक्टिविटी और हाइपो एक्टिविटी दोनों भी होता है. इसको ये दोनों में भी हमको B5 लेवल्स
टेस्ट करना पड़ेगा। और द नेक्स्ट विटामिन इज B6, pyridoxine deficiency. Pyridoxine deficiency, it is a chronic form of B5, neurological manifestations rather. It is a chronic form. That means the conversions are more higher than B5 deficiency, pantothenic acid deficiency. So इनमें पायरिडॉक्सिन में डेफिशिएंसी में ज्यादा से ज्यादा कन्वर्शंस वेरी वेरी सीवियर से आता है। और इट इज बी पायरिडॉक्सिन डिफिशिएंसी, इसको हमने बताया क्या है कि वो तो मदर मिल्क जो आता है ना, उसमें पायरिडॉक्सिन डिफिशिएंसी होने से, और मदर में नर्सिंग मदर में पायरिडॉक्सिन डिफिशिएंसी होने से वो नर्सिंग मदर नहीं दे सकता बात है वो तो, कैनॉट गिव डायरेक्ट हेल्दी मिल्क टू द infant. So the B6 deficiency starts from infancy onwards. So childhood onwards. So what we will find is after 3 months or 6 months of birth, 6 months after birth, they do suffer with some sort of conversions that continues. If the supplementation is proper, or B6 supplementation is proper to the that person or infant, that comes to normal, or if continuous deficiency continues, it becomes a true epilepsy rather brain deficiency. And the next thing, it is regarding mind aspect, convulsions and polyneuropathy, the second factor of pyridoxine deficiency. Pyridoxine deficiency, polyneuritis, polyneuropathy. It is a it comes with the polyneuropathy in patients, comes with what is called anti-TB drug isoniazid. What will give, actually yellowbuds generally prescribe isoniazid, rifampicin, ethambutol, isoniazid ऐसा होता है ना, AKT3 AKT4 हम कहते हैं उनको। वो सप्लीमेंट्स देने से और वो मेडिकेशन देने से, एंटीबायोटिक पेशेंट्स को देने से इन्फेंटाइल टीबी और अदर adulthood TBs. So if they are provided with that sort of antibiotic, isoniazid, that obstructs the absorption of this pyridoxine deficiency, that cannot be absorbed into the intestines because it blocks the intestine mucosa to absorb, and rather it lessens the what is called intrinsic factor, which is produced in the stomach mucosa, papillary columnar epithelium of stomach mucosa. So that anti-TB drug will block the that production of what is called intrinsic factor. Thereby, the binding does not happen. The deficiency happens in adulthood, even or in childhood also. And um, if we go to the clinical pictures of those patients, we can find there is a rise of ESR and with the history of TB, and also there is another matter. And coming to the next one, last one is B12 deficiency. It is maximum cobalaminates. Cobalaminates. There are so many types of cobalaminates. Methocobalamin, cyanocobalamin, ऐसा ज्यादा से ज्यादा आता है। और तो उनका डेफिशिएंसी जो आता है ना, or deficiency methocobalamin also happens in intestines. All the vitamins जो बोला ना मैंने B1 से B12 तक, those will be absorbed from the intestine mucosa. Especially B12 will be absorbed in the terminal parts of the ileum. There, actually, the intrinsic factor जो produced in the stomach mucosa enters into the small intestine, and there it binds the cobalamin, and it releases the cobalamin into the mucosa of stomach, or rather into the directly into the blood vessels which are connected with the liver. Mesenteric vessels जो कहते हैं ना हमने, mesenteric vessels को भेजता है। मीसेंट्रिक यहाँ पे दो हमको बैरियर्स है, इंट्रिंसिक फैक्टर एब्जॉर्ब करना है,
वो जो इंट्रेंस फैक्टर कंबाइन होने के बाद वो तो टर्मिनल इलियम तक जाना है। जाने के बाद टर्मिनल इलियम में भी कोई पैथोलॉजी नहीं होने से ही वो तो एब्जॉर्ब होता है, नहीं तो नहीं एब्जॉर्ब होता है। सो मैक्सिमम B12 and B vitamins a deficiency occurs in pathological conditions related to gut, starting from stomach to large intestine and majorly in small intestine. जो what is called gastric ulcers, gastric ulcers or gastroileostomy, not gastrojejunostomy, gastroileostomy, and those who are having ulcerative colitis and IBS rather. And the next factor related with mesenteric lymph nodes, those who cause inflammatory changes, and the antibiotics and the drug substances like alcoholism also, and addictions like nicotine poisoning, like that, those who take orally, they will obstruct or they will cause mucosal pathology of gut that hinders the absorption of these B complexes. So it is rather in homeopathic aspect also it is highly important. Why I am telling the clinical manifestations means each and every step we have to observe while patient narrating. कहते हैं इसको अल्कोहल ज्यादा होता है, पहले होता है अभी नहीं, तो उसका म्यूकोसा वो तो जो होता है, जो फूड स्टफ अच्छी तरह नहीं लेते और नॉनवेज जो नहीं लेते, और क्या है कि ये फैक्टर्स हमको ऑब्जर्व करना है। इसलिए हमका केसेस में भी वो कॉलम होता है, कैस्ट क्या है आपका, और आपका रिलीजियन क्या है, आपका रेस क्या है, ऐसा क्वेश्चन आता है। क्योंकि रेशियल डिसीजेस, racial diseases are also responsible for malabsorption syndromes like B complex syndrome भी उसमें B complex deficiency syndrome भी उसमें एक है। और coming to the B12, this actually the deficiency disorders of B12 types of disorders इनमें ज्यादा है। हम क्या कहते हैं रेगुलर प्रैक्टिस में गलत मत समझना, हमको ज्यादा से ज्यादा ऑर्थोपेडिक केसेस आते हैं, बैक पेन और लो बैक पेन और स्पाइनल डिसऑर्डर्स, सर्वाइकल लंबार स्पॉन्डिलोसिस ऐसा हम देखते हैं। आप भी सुना है, आप भी देखा है, आपके आप भी ट्रीटमेंट कर लिया है, इलाज कर लिया है सो मेनी पीपल को, पेशेंट्स को। उनमें हम MRI रिपोर्ट्स देखते हैं। MRI रिपोर्ट्स में जो होता है वो तो एंटीरियर हॉर्न, पोस्टीरियर हॉर्न और एंटीरियर प्लेक्सस, पोस्टीरियर प्लेक्सस, और क्या है कि लैटरल और मीडियल compression, like that we will read in the MRI reports. Those are highly important in selection of our remedies as well as noting the B complex deficiencies even. In this actually B12, it majorly affects the what is called white matter. So, in cerebral type, the first variety of disorder is cerebral type. Cerebral type, wide range, it is having wide range of affinity for cerebrum, and it covers the disorders of mood. मूड डिसऑर्डर्स जो होते हैं हमको, क्या हमको मैंने पेशेंट्स को वो तो शिजोफ्रीनिया एंड डिप्रेशन, एग्रेसिवनेस, एंगर, और क्या है कि चिटचाट, चिल्लाना, ऐसा जो होता है। और चिल्ड्रन में भी ज्यादा से ज्यादा रोना, वो तो स्टॉप नहीं करता है लाइक से ना। और हाई साउंड से आवाज करता है, कैमोमिला चिल्लाता है, खींचता है, वो तो कैमोमिला। और वो तो कुछ स्टोन्स को फेंक देता है, वो तो ऐसा नक्सवाम का नेट्रमोर ऐसा ड्रग्स में हमको मिलता है। ऐसा अभी सेलेक्ट करने के लिए और डेफिशिएंसी हमको लर्न करने के लिए भी उससे हमको मालूम पड़ता है। ये तो B12 का डेफिशिएंसी में ऐसा होता है, मूड डिसऑर्डर, मेंटल स्लोनेस, मेमोरी डिफेक्ट, एंड विच में भी इट में बी सीवियर or it may be dull. In some cases it may be severe, and confusion होता है उसको ज्यादा से ज्यादा।
or persistent or relapsing delusions. That means persistent delusions, गलत समझना और गलत percept करना ऐसा, और ये तो कंटिन्यूअसली होना और रिलैक्सिंग, और कुछ समय में आना कुछ समय में जाना, और तो एंड पैरानॉइड बिहेवियर जो होता है और तो बीटोल डिफिशिएंसी से होता है, और वायलेंट मैनिया मैंने बताया, और विजुअल ऑडिटरी हैलुसिनेशंस, visual hallucinations as well as auditory hallucinations, what we will find in what is called that one, mm, what is called that साइकोसिस मैंने बताया, शिजोफ्रीनिया, शिजोफ्रीनिया में ये तो ज्यादा होता है, और इसमें B12 डेफिशिएंसी से क्या होता है, मस्कुलर फैक्टर है तो वाइट मैटर है ना, मस्कुलर फैक्टर जो स्पिंक्टर्स जो होता है वो होता है इफेक्ट होता है, वो तो fecal or urinary incontinences, fecal incontinence और urinary incontinence, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हमको एडल्ट्स में आता है और चिल्ड्रन में भी आता है, वर्म इन्फेस्टेशन से ऐसा, और एडल्ट्स में डेफिशिएंसी डिसऑर्डर से आता है, और fecal incontinence where there is sphincter loss in adulthood with actually those who are not supplemented with B12, न्यूरोलेमा डिसऑर्डर्स जो होता है, न्यूरोलेमा डिप्लीट होता है, वो तो एरोड होता है, एरोड होने से कंडक्शन नहीं होता, पोटाशियम का कंडक्शन नहीं होता, इससे उनका व्हाट इज कॉल्ड दैट स्टैमिना और स्ट्रेंथ ऑफ दैट फिंगर विल डिक्रीज, दैट इज मेनली ड्यू टू B12. So in other way we can understand that B12 is a constructor. So B12 is a constructor of neurolemma. So what drugs हमारे होम्योपैथी में B12 कंस्ट्रक्शन और B12 बढ़ने के लिए, वो तो फर्स्ट ड्रग है नफालियम, नफालियम कहते हैं, और पैरास्थेसिया से ऐसा होता है, कंस्ट्रक्शन में द नेक्स्ट ड्रग इज सल्फर, देन कम्स सोरिनम लाइक दैट, and depending upon affinity ledambal also is there, discuss करते हैं later, and these lesions sphincter loss मैंने बताया, and ये तो स्पाइनल रिलेशन नहीं होने से भी ये तो आता है मिक्सचरेशन, दैट इज इनवॉलंटरी मिक्सचरेशन, इनवॉलंटरी स्टूल्स आल्सो, involuntary diarrhea rather, this also deficiency also comes in elements also, like chronic diarrhea नहीं है, वो तो एक्यूट डायर जो होता है उसमें भी स्पेक्ट्रल लॉस होता है, वहां पे नर्व सिस्टम भी नहीं अच्छी तरह नहीं काम कर सकता है, इसलिए हमको मालूम क्या पड़ता है कि प्रिस्क्रिप्शन में जो देखते हैं ना, मेथाकोबालामाइन, साइनोकोबालामाइन, गावारिच ऐसा देते हैं 150 300 mg में और 100 mg में, उसमें वो लोग डायरिया नहीं बताते हमको, रेदर कॉन्स्टिपेशन बताते, और क्या बताते कि स्लीपी और ड्रोजी, और those patients who are having much what is called बर्निंग, टिंगलिंग, पैरेस्थीसिया से ऐसा जो सफर जो ज्यादा होते हैं उनको ये इसके B12 के साथ साथ नॉरट्रिप्टिलिन विच इज ए सेडेटिव जो भी जोड़ते हैं, और नॉरट्रिप्टिलिन जोड़ने से उसको नींद ज्यादा आता है, नींद ज्यादा आने से इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन कम होता है, इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन कम होने से भी वो तो इंटर्न B12 एब्जॉर्प्शन कम होता है और प्रॉब्लम जाता है, हाइपर विटामिनोसिस से भी हाइपो विटामिनोसिस से भी ये प्रॉब्लम तो ज्यादा होता है, और these symptoms actually what is produced by the B12 depends upon the demyelination of white matter मैंने बताया previously, it is also in the brain of the same nature as occurs in the posterior lateral columns of the spinal cord, posterior column. So MRI हम पढ़ने से मालूम आता है posterior columns of the spinal cord, they will be mostly affected with B12 deficiency, and this also will find deficiency disorders affect the peripheral nerves.
Peripheral nerves माने palms, our soles, our uh, actually distant parts. That burning may be, some people बताते सिर में भी burning. It is not the sirdard or headache. It is burning in the head. That also the maybe you must suspect the B12 deficiency there. And the second factor is peripheral neuritis or polyneuritis. There, the motor part actually affected will be affected more with B12. That actually will find in normal way. पेशेंट्स बताते हैं हमारे को क्रैम्प्स ज्यादा है हमका क्या है कि रात में हमको ये तो कास पकड़ते हैं ऐसे बोलते हैं सो वो तो स्टैंड होता है काट में उठ के स्टैंड आता है पैदल चलता है इससे उसको सर्कुलेशन ज्यादा आके कुछ तो कुछ सप्लीमेंट होके ग्लूकोज और कैल्शियम कैल्शियम बैलेंस आके वो तो पैदल चलता है और बाद में सो जाता है इसमें हमको क्या लाभ है क्या है कि ड्रग सिलेक्शन रात में उठना या खींचना ये तो सर्कुलेशन प्रॉब्लम डिप्लीटेड सर्कुलेशन दैट एक्चुअली विल फाइंड इन लैकोसिस and Rostax, Metsal. These drugs will actually having affinity over B12 vitamin supplementation. So हमारे ड्रग्स जो ड्रग्स है वो तो सप्लीमेंटेशन के भी सप्लीमेंटेशन ज्यादा करने के लिए भी काम करते हैं ये तो सोरिक मैनिफेस्टेशन से और रात में जो आना सिफिलिटिक मैनिफेस्टेशंस और साइकोटिक मैनिफेस्टेशंस दोस इन माइasmatic मैनर में लेने से उनको सोचना पड़ेगा और सोरिक मैनिफेस्टेशन में सल्फर और सोरिनम और इनमें से अनदर ड्रग है बोल मत जाना एगारिकस क्रॉस एफिनिटी एंड द पेरिफेरल न्यूराइटिस मैंने बताया इनमें से ग्रे मैटर B12 में B1 में व्हाइट मैटर B12 में और द नेक्स्ट फीचर B12 डेफिशिएंसी इज सबक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन सो कंबाइंड डिजेनरेशन मींस ये तो B1 और B12 दोनों कंबाइंड करके डेफिशिएंसी होता है इनमें एसेंडिंग और डिसेंडिंग नेचर ऑफ न्यूराइटिस आता है ये दोनों कंबाइंड डेफिशिएंसी होने से ascending nature, gradual ascending nature of paralysis will find, or gradual movement loss, gradual onset that actually we will find in abrotanum primarily, and there we can also find in conium. So ascending and descending, pretty well. It is Kalmia descending, and the localized features will be हम डील करते हैं वो तो लेडम पॉल ascending टाइप लेडम पॉल काम करता है ज्यादा ये तो येलो पक्ष पूछते हैं आपका ड्रग्स क्या करते हैं ये तो सप्लीमेंटेशन ये तो इंट्रिंसिक फैक्टर नॉर्मल होने से और क्या है कि इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ इंटेस्टाइनल नॉर्मल होने के लिए जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं ये पॉलीन्यूराइटिस को ये दोनों हमको बताना पड़ेगा उनको क्या है कि वो पूछते हैं होम्योपैथी के पास जाए वो क्या करता है क्या जाता है ये क्वेश्चन भी हमारे को मिलता है पेशेंट से और डॉक्टर से भी हमारे वर्ड में वो तो आता है or the next one is etiology of B12. Why I'm concentrating more on B12 means nowadays the prescriptions of allopathy is more on B12 deficiency only, not in others. Only you will find vitamins, multivitamin supplements in pregnant ladies. So they बोलते हैं प्रेगनेंसी मेल्स को नहीं आता है चाहे कि बोलते हैं मेल्स को देने के लिए विटामिन सप्लीमेंट देने के लिए वो ओनली B12 देखते हैं एलोपैथ्स तो हमारे को उनके बारे में सोचना ही हमको नहीं आता माइंड में क्या है कि टिंगलिंग एंड नमनेस में कोई क्या है कि डोंट हेजिटेट टू प्रिस्क्राइब विटामिन मल्टीविटामिन because they will supplement and reduces your thinking process majorly and patient recovers so easily. So etiology in all these vitamin deficiency is childhood to old age, but B12 comes in 40 to 60 years of age and both sexes, that means male and female affected normally or equally and
The deficiency disorders majorly will find familial in B12, familial. In others, only in dietary intake. B12 familiarly be because of echlorhydria or Down syndrome and dullness and mental confusion states. Those who are dullers, they will have the low values of what is called absorption, understanding, and movement. Rather, mingling with people also is very less. Those will have hindrance in nature of absorption of these vitamins, B12 especially. And the familial history is very important. And the last one is associate conditions. Associated conditions with B12 and B vitamin deficiencies is pernicious anemia. All the vitamins B बताया ना वो तो हीमोग्लोबिन फॉर्म होने के लिए आरबीसी मेच्योर होने के लिए और क्या है कि व्हाट इज कॉल्ड हाँ बोन मैरो, बोन मैरो, येलो बोन मैरो टर्निंग नहीं होने के लिए वो तो काम करते हैं मेजरली विल फाइंड अर्ली चेंजेस और अर्ली येलोइंग बोन मैरो विल फाइंड इन डायबिटिक्स. So there the B complex deficiency because diabetics they take more anti-diabetic drugs like metformin, which is very low gastritis forming drug, and the new drugs, sitagliptins, vitagliptins, dapagliptins, whatever you think, whatever you prescribe, they will have more acidity. So more acidity means less production of intrinsic factor. So their inflammatory process will be more. Jalan bolte drugs से. So there appears those who have, and in another way the jalan का वो burning कम होने के लिए antacids देते हैं हम. Acid नए production कम करने के लिए antacids especially rabiprazole and pantoprazole. These two drugs are very actually harmful for absorption, or they don't allow B complex to be absorbed into the intestines. And the next factor is associated conditions, pernicious anemia, and the malignancies, carcinoma stomach. There, actually bleeding disorders, bleeding, internal bleeding, ulcers, bleeding, carcinoma. In carcinoma also, especially cancers, where there is depletion of all type of tissues. There also neuritis will be more. जलन ज्यादा होता है उनमें. और gastrectomy already told you, or gastroenterostomy already told you, and steatorrhea, and malnutrition from pernicious or not pernicious, it is only protein deficiency. Protein deficiency also actually will be there. Protein deficiency also leads to what is called B12 deficiency absorption. And what we will find in some people, marasmus, or what is called that one, children malabsorption syndrome, MAS. Those are also having low levels of B12 absorption. And lastly, we'll go to the factors of what is called clinical features. The onset of all these vitamin deficiencies are very gradual. So it takes time, but it may be rapid where the patient is having pathologies or diseases with him. So diseases are those patients with the number of diseases, they will be more affected with vitamin deficiencies. And these will have subjective sensory disturbances like paresthesia, tingling, numbness, and that may be in toes, fingertips, or what is called uh, that may be extending into the upper limbs, extending upwards
to the upper or lower limbs where they affected, what part they affected, or what in what part they developed. And sometimes burning also associated with stabbing nature. That means some stabbing nature of pain, and lightning pains. What we'll find in hypericum, our drug, lightning pains. And in another drug, it is a tarantula cubensis, and hysterical nature mind, where the mind is actually affected or brain affected, tarantula hispanica. Their the mental symptoms rather than me, and are compared to me, very well, pretty well know about the mental symptoms. And paresthesia develops peripherally, and it spreads to the central parts also, and upwards also. And objective sensory loss, sense of actually sense of vibration, some sort of tremor, that what we will find in Korea, and some sort of hyperthyroidism also we will find some sort of fine movements, and the posture and position movements begins in lower limbs. Position and movements also will be altered with the deficiency syndromes, and glow and stocking type. What will glow stockings? They are actually wearing objects for varicose veins. Stockings कैसे compress करते हैं, ऐसा feeling होता है, compress होता है muscles or nerves with and gloves nature. Gloves doing surgery or examining the patients who wear gloves. इतना प्रेशर देता है ऐसा पेशेंट्स बताता है. वो तो objective symptoms they will tell, and the motor symptoms. Motor symptoms means weakness, or what is called asthenia or atonia after onset of sensory disturbances. These actually motor affections will come after sensory affections or sensory imbalances. And the next factor is reflexes variation. Reflexes, they will vary. They are variable. They may be higher, or they may be hyper or lower, diminished. And the sphincter disturbances, as I already told you, initially difficult. A urinary bladder, it is difficult to evacuate, like in prostate enlargement. But it is not actually deficiency disorder, prostate enlargement, but atonia of bladder. That leads to precipitation, or rather, what is called stagnation. Stagnation in the bladder, and that micturition is somewhat hindered. That leads to hyperactivity, that means polyuria, or hypoactivity, that means stoppage of urination. So they will have stoppage of urination, that needs actually drugs. In other cases, that needs piping. So catheter must be uh, allowed. We have to pass the catheter to avoid the urination, and thereby examining the levels of these actually vitamins in blood. Especially one thing in the middle, I'm telling you, B1 to B5 and B6, they are very difficult to get results, because um, when we send the patients to or get examined the levels of those vitamins, he has to stay 2 to 3 days or one day in the laboratory. So those laboratories are provided with hospitalization. There, they need checking of blood vessels, and for that they need injections or inoculation of those materials, vitamins into their blood, which are very, very what is called pathetic, painful, and also waiting, and also they will give side effects like some sort of hyperactivities like that, or they may enter into coma, or they may have allergies.
So we don't actually send those patients for those deficiencies majorly. Only for B12 deficiency only will send. That actually must be more than 100. That is highly essential B12. Less than 100 level picograms, especially in blood, that won't have any. That will actually give signs and symptoms. So we have to send those who actually reveal their paresthesias or tingling and um, uh, numbness. Those will be get tested for vitamin B12. Can the mic phone this it? Next, the next thing is mental changes. After sphincter disturbances, we have to go for mental changes. Mental changes common in all actually vitamin deficiencies in regarding B vitamins, dementia and impaired memory, confusional psychosis, irritability, and depression. Of course, majorly homeopathic doctors in our South India will have so much of these symptoms because patients are very, very intelligent than doctors. They will put a number of questions to the doctors. So, may, doctors may have deficiency but with anger. That anger also actually part and parcel of vitamin B12 deficiency. So we have to examine ourselves also whether we are aggressive or not before patients, our friends, and what they comment also comment on us. We also observe with complete with purity of mind. We have to observe ourselves also because the aged people, doctors are also human beings. They will also have some disorders like that. So for that, they need examining themselves. And the bilateral prime लास्ट वन B12 से जो आता है ये तो एज में आता है और चिल्ड्रन में भी आता है एज बढ़ाने से भी आता है ये तो क्या है कि प्राइमरी ऑप्टिक एट्रोफी it is actually those who are having deficiency of B12 they will have optic atrophy कैसे समझते हैं पेशेंट्स में ऑप्टिक एट्रोफी माने जलन बताते हैं वो तो आंखें में जलन और इससे साथ साथ क्या है डॉक्टर हम ऑप्थेल्मिस्ट के पास गया वो तो बताया कि तेरा ऑप्टिक नर्व जो वाइट हो गया और ब्रिटल हो गया ये तो कंडक्शन नहीं कर रहा है प्रॉपरली एंड ये तो नहीं भेजता है वो सिग्नल्स नहीं भेजता है इंटरनली ऐसा बताते हैं वो सिग्नल्स नहीं बताना ये तो B12 का डिफिशियंसी है और ये तो ऑप्टिक नर्व इनमें से कंडक्शन जो होता है ना व्हाइट मैटर से होता है वो तो B12 का डिफिशियंसी है ग्रे मैटर जो होता है वो तो B1 का सो B12 सप्लीमेंटेशन करने से भी वो तो काम होता है वो क्या देते हैं प्रिस्क्रिप्शन में वो नहीं बताने से प्रिस्क्रिप्शन में वो एलोपैथी प्रिस्क्रिप्शन में हम देखना है वेयर देर इज लूब्रिकेशन ड्रॉप्स जो देते हैं ना वो लूब्रिकेशन ड्रॉप्स को हम उनके प्रिस्क्रिप्शन में देख के लूब्रिकेशन ड्रॉप्स देने से भी उनको मालूम वो तो कम नहीं पड़ा प्रॉब्लम तो हमको देना है पहला ड्रग सल्फर सल्फर एक ही डोज मैं मेरा प्रैक्टिस में दिया एक ही डोज तो वो जलन तो कम पड़ता है कुछ से कुछ और 3 दिन और 4 दिन के बाद वो फिर आता है बताता है जलन और बढ़ता नहीं क्या है कि ऐसे ही है कुछ तो कम पड़ा ऐसा बताता है उससे हमको नेक्स्ट ड्रग सिलेक्शन करना पड़ेगा या तो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर thereby you have to go APIS or like that you have to burning remedies anthraxinum like that you have to go or select those remedies depending upon the clinical situation and the diagnosis in all vitamin deficiencies will have low deficiency or low values of hemoglobin. In majority of cases, hemoglobin will be less and macrocytosis. That means
Macrocytosis means big immature cells in the blood, peripheral sphere और डिफरेंशियल काउंट करने से हमको मालूम होता है डीसी डीसी ऐसा होता है ना। और ये तो डिफरेंशियल काउंट के साथ साथ हमको कंप्लीट ब्लड पिक्चर लेने से क्या हमको मालूम पड़ता है कि हाई एमसीएचसी मीन कार्पास्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। सो मीन कार्बोक्सिलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन ये तो हाई होने से हमको डेफिशिएंसी डिजॉर्डर्स तो को हम मन में सोचना है। और मेगलोब्लास्टिक बोन मैरो, that actually it is not our purview, but after getting those results in laboratory reports, we have to also see those reports. And gastric disturbances like ecloorhydria, endoscopy करने से और gastric juices examine करने से ecloorhydria, ecloorhydria के लिए हमको ड्रग्स है वो तो natrium chloratum. Natrium chloratum is the main drug for ecloorhydria, where there is natrium chloratum is the best production utensil of B12. सो B12 एब्जॉर्प्शन होने के लिए नेट्रम क्लोरेटम ज्यादा से ज्यादा वर्क करता है। इसके साथ साथ नेट्रम आर्स आल्सो हैव टू गिव बिकॉज द बर्निंग एंड द मेंटल सिम्टम्स जोड़ता है नेट्रम आर्स में ज्यादा से ज्यादा। एंड एनीमिया ज्यादा से ज्यादा होता है। और इसके साथ साथ थायराइड प्रॉब्लम भी जो होता है ना इसके साथ साथ, और थायराइड डेली लेने से भी बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी होता है। वो तो सप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। एक सप्लीमेंट करने से लाइक गांधी हमारा जो जाति पिता है ना, क्या है कि वो तो एक चीख में बांधने से वो तो क्या है कि सेकंड को दिखाता है। ऐसा क्या है कि एक दवा देने से और एक दवा सप्लीमेंट करना पड़ेगा हमको। ऐसा तो वो सप्लीमेंटेशन इन एलोपैथी अवॉइड करने के लिए हमको क्या है कि क्लिनिकल ड्रग्स भी देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ हमको another test is serum blood levels of B12 will be less than 100. So in those patients we have to supplement, but the supplementation will be only for transient period of time, because supplementation in adults, not elderly, in adults and children and young age group is not advisable to continue for longer period, because they take diet normally, and they will have much amounts of what is called nutritious food, and they will go for different places, they will visit different places, they will have so much of what is called dietary supplements depending upon taste. Those will also B12 deficiency will find in foodies, fatty food जो पसंद करते हैं ना उनको भी B12 डेफिशिएंसी ज्यादा होता है। और जो आइसक्रीम्स ज्यादा से ज्यादा लेते हैं उनको भी ये तो B12 डेफिशिएंसी होता है। Our B12, all the B12, B vitamins will be stored in the liver. Ample quantities of vitamins will be available in liver. So, what generally people advise the patients to take liver meat. Liver meat is enriched in minerals as well as B complex vitamins and iron supplements. सो दे विल एडवाइस। सो यहाँ से हमको पैथोलॉजी हमको फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी मालूम पड़ता है। फिजियोलॉजी क्या है, लिवर क्या कहाँ से लेता है फूड, इंटेस्टाइन से लेता है। इंटेस्टाइन से लिवर को कैसा जाता है, मीसेंट्रिक वेसल्स से। मीसेंट्रिक वेसल्स को कैसा जाता है, इंट्रिंसिक फैक्टर absorbs or binds the minerals, vitamins, etc., etc. And बाइंड करते हैं और खून में जोड़ता है। खून में जोड़ने से वो तो डिप्लीशन फैक्टर भी हमको होना है। क्या है कि
वो इंट्रिंसिक फैक्टर से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करना के लिए ये तो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स हमको रिलीज करना है प्रॉपर, इन प्रॉपर वे। सो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स रिलीजेस द रिलीजिंग फैक्टर्स फॉर the vitamins from the combined forms of what is called intrinsic factor and the vitamins. So it depletes these two, and it sends the vitamins into the bloodstream, especially in the mesenteric bloodstream, not into main bloodstream, because intestines are mainly supplied with mesenteric vessels. So that actually enters into the liver. Those much quantities of vitamins will be stored in the liver. Liver releases so much of B12, even we go fasting, or even intrinsic factor is not properly supplied, and the binding factors are pancreatic diseases where the pancreatic enzymes are very less, or production is absent. The patient can hold the B12 and B deficiencies up to a matter of 3 to 6 years. But after that, it actually hinders, or patients go into very, very pathetic manner. Here, another factor, what I'm telling you, if any person is depleted or is not having that vitamin deposits in the liver, if he is supplemented vitamins, that must be very carefully we must prescribe. If we prescribe any vitamins directly, homeopaths, why? Because that actually uh, causes so much of drastic effects. Like we actually observe hartals in public places as well as in homely life or family life. हड़ताल जो फूड छोड़ते हैं, उनको पहले गैस्ट्रिक जूसेस ज्यादा बढ़ते, उनका शुगर लेवल्स बढ़ते, और बाद में 3 दिन के बाद और 2 दिन के बाद, डिपेंडिंग अपॉन देयर sustaining capacity or their mind capacity and physical capacity, that sugar levels as well as vitamin levels, mineral levels will fall down. That actually, so वहाँ पब्लिक प्लेसेस में डॉक्टर जाते हैं, उनको पहले क्या हमको रिपोर्ट क्या बताते हैं, उनको खून लिया ब्लड टेस्ट करवाने के लिए, शुगर लेवल्स और ताकत लेवल्स कम बढ़ा और ज्यादा नॉर्मली यही सब बताते हैं रिपोर्ट्स में। वो तो भी मन में रखना, ये तो मन में रखने से हमको पैथोलॉजी मालूम होता है, और प्रोसेस ऑफ डिसीज एंड इट्स प्रोग्रेस इन आवर बॉडी मालूम होता है। और ये लिवर जो होता है ना, एनिमल्स में भी होता है और क्रीचर्स में भी होता है। So non-vegetarian people, जो those who take meals, non-veg meals, they are fond of taking liver and spleen. So they will not get any sort of what is called deficiency disorders in normal way, normal people, those who are having hormonal enzymes balance. And coming to the homeopathic aspect, we have to choose. It is the will and pleasure and the nature of mind thought process. We have to select the remedy for those patients, because the विटामिन्स मिनरल्स डेफिशिएंसी मालूम आना और उसके सोच मन में आना डिफिकल्ट होता है। क्या है कि पेशेंट्स हमको ज्यादा से ज्यादा हमको डिफिकल्टीज देते हैं। क्या है कि कॉमन क्वेश्चंस दे पूछते हैं, डॉक्टर साहब हमको नॉर्मल होता है ना, हमको ये तो आपके पास ट्रीटमेंट है ना, और आप कैसे करते हैं वो बताया, हमको किसने भेज दिया वो तो बताया, ये तो 3 दिन में कम होता है, ये तो 4 दिन में कम होता है, ऐसा ये क्वेश्चंस हमको थॉट प्रोसेस लेने के लिए और उसके बारे में और उसके बारे में सोचने के लिए हमको
हिंडरेंस करते हैं, या ये तो ऑब्स्टिकल्स है उसके बारे में सोचने के लिए। और विल आल्सो सोचते हैं उसके बारे में, कैसा है कि continuously asking or intermittently is asking. Continuously asking, and after answering those questions, he is satisfying means his acidity level is low. And only for certain times only he will develop that sort of anxiety. So that also I already told you, intermittent and permanent permanent supplements. मैंने बताया previously in B3 deficiency and B4 deficiency, B4 not B5. So in that also we'll come across that feature, that if he is actually pacifies, we'll go for arsenic, और कंटिन्यूसली ही इज आस्किंग, डॉक्टर साहब हमको इलाज कर सकते हैं, हमको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, ये तो ज्यादा से ज्यादा बिग प्रॉब्लम है, और मैं कब कंप्लीट हेल्दी होता हूँ, ऐसा वो तो मन में वो तो कंटिन्यूसली सस्पिशन रहता है। उसको लैक्सिस लेते हैं हम ड्रग सिलेक्शन के लिए, और कुछ कुछ समय हम आर्सेनिक लेते हैं, और नक्सवाम का वो तो डोमिनेट करता है। डॉक्टर साहब ये तो होता है और नॉट, साफ साफ बताइए हमको, और एल्स आई विल गो टू अनदर डॉक्टर, ऐसा। ये तो नक्सवाम का है। नक्सवाम का क्या करते हैं वहां पे, एसिडिटी लेवल्स सो कम करते हैं वो तो डॉक्टर साहब नेक्स्ट टाइम आल्सो उस एसिडिटी लेवल कम नहीं होता। एसिडिटी लेवल ऐसा ही होता है, बट इलाज होता है उसको। नेक्स्ट टाइम कैसा आता है वो तो, डॉक्टर साहब आप अच्छे किया, आप एक ही डॉक्टर है, हमको अच्छे किया। नो अदर डॉक्टर एक्चुअली इतना ऐसा आपके जैसा नहीं किया। ये तो नक्सम के है। हमको भी वो तो पहले व्हाट इज कॉल्ड थप्पड़ देता है, बाद में वो तो ऑइंटमेंट लगाता है। ओके, ऐसा। ओके, और अंदर फैक्टर है आ, इसके बारे में क्या क्या बताना है आपको। हाँ, another factor, B12 and B complexes are interrelated with our nervous system। मैंने बताया जिस नर्वस सिस्टम क्या कहता है, क्या करता है, ये तो ईच एंड एवरी सिस्टम को डैमेज करता है। क्या है कि nephrotic conditions or nephrotic conditions as well as brain conditions, that may be physical, mental, or psychological, three types of levels. And in what manner they actually affect the people, that all are affected with only nervous system relation only, not with any other sort of enzyme or so. Only nervous system is the final which sends the impulses or the signals to what to do. Even my actually giving lecture also the nervous system, and they asking me to explain, it is your nervous system stimulated you to ask me to some give me some lecture. Okay, thank you madam, any questions? बिल्कुल, थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन है, बट योर इंग्लिश इज मोर गुड देन हिंदी। Huh? योर इंग्लिश इज मोर गुड देन हिंदी। Of course. सर आई हैव अ क्वेश्चन कि डायबिटिक न्यूरोपैथी जो है, What is called? What? डायबिटिक न्यूरोपैथी, Diabetic neuropathy. हाँ, उसमें मिथाइल कोबाल्ट कितना रोल प्ले करेगा? B12. मिथाइल कोबाल्ट, यस, B12। Methyl cobalamin. इसको methyl cobalamin or cyanocobalamin. Actually, it depends upon the nature. We have to ओके, observe his feet first. Peripheral ओके, parts. Peripheral parts. In diabetic people, actually, you know already, in people, those who are having less quantity of subcutaneous fat, that means ओके, with the diabetes, पतले होते हैं, यस, lean, they will become lean. So
In those patients, you have to prescribe methocobalamin. There, the jalan will be more, that burning will be more in those people. Along with that, they will have numbness, ascending type. And in diabetics, those who are obese, they will have burning, but with cold applications rather, they will have some sort of relief. Whereas the Badale people, jo hote hai na, they don't have any sort of relief with that one. And there they will need methocobalamin along with pyridoxine, and along with that one, they need cyanocobalamin also. Okay, sir. So you have to observe the diabetic prescriptions and what is called psychiatric prescriptions also, and optic, those doctors, ophthalmologists, they will prescribe enriched what is called B-complex drugs. And sometimes nowadays they are mixing the Ayurvedic drugs also in that one. Okay, sir. So one So more question. tell me. वन मोर क्वेश्चन सर, जब एक्सीडेंटल केसेस आते हैं जब हमारे पास, बिकॉज मैं तो हॉस्पिटल एम्प्लॉई हूँ, जब Okay. एक्सीडेंटल केसेस आते हैं खास करके हेड इंजरी हो या कोई इंजरी ऐसी हो जिसमें अब्रेजन्स हो जाएं और कोई नर्व डैमेज हो जाए, Nehru? नर्व कोई डैमेज हो जाए, जैसे मैंने Ah, देखा जैसे हाथ का यहाँ पे एक नर्व में दर्द हो रहा है, यहाँ किसी नर्व में दर्द हो रहा है, आई हैड सम पेशेंट्स लाइक दिस ना, तो उसमें okay. हम कौन सा विटामिन बी यूज कर सकते हैं? उसमें भी विटामिन B12 और एनीथिंग एल्स? It is actually depends upon his levels. Actually, what damage, how, up to what extent the damage happened. ओके. That actually is it. Actually, our these B complexes, what they will do, they will repair the nerve surfaces. So what you have told is cut injury. So in cut injuries, is that is separate from what is called scratched injury. या Scratching, so खुजाट आने अब्रेजन से और क्या या ऐसा होता है, ऐसा नर्व डैमेज होता है। नर्व डैमेज होने के लिए ही वो बे कॉम्प्लेक्स वर्क करते हैं। पहले क्या है कि वो नर्व कनेक्शन रीजनरेशन आना है। मैंने एक केस किया, रेडियल नर्व कट इंजरी, where there is wrist drop happened in a patient who is having marriage in 2 months. So he got injury. He fall down on road in an accident, and his humerus fractured. So there, my orthopedic doctor who guided me, he done surgery for that one, and actually I asked him to do surgery for the radial nerve also. So he actually connected that tissue and wired simply. So there, wrist drop not improved primarily up to 1 week. So he actually what is called in Telugu कहते हैं, और ये asked me jovially whether homeopathy works करते हैं, ट्राई करता है तो क्या करता है, तो इसमें होम्योपैथी कैसा वर्क करते है ऐसा। मैंने दिया हाइपरिकम 200, followed by that injury, for that injury हाइपरिकम 200 दिया, और आर्निका भी दिया, because it is an injury. सो आर्निका एक्सटर्नली दिया, वो क्या है कि स्टिचेस में, और इंटरनली आर्निका 200 डेली 1 डोज मॉर्निंग अंटिल पेन कम होने तक, और हाइपरिकम डेली नाइट फॉर 5 days. Because in my practice, hypericum, actually in my practice, I came to know many injury cases. Usually, they come to me in my previous practice days. So after 5th day only, that starts working hypericum. Immediately that doesn't work in lower potencies, because that's an injury. For that, I will prescribe in low potencies. Low potencies mean 230. 30 I don't use, 200. So in 200, after 5 days of supplementation daily at night time, he slept well, and after a matter of 12 days after supplement, after giving a matter of 5 days hypericum, so a matter of 12 plus 5, 17 days after, he could able to move his wrist up to 30%.
That actually our drugs will do. They will join the neurolemma. So that happens is within the nerves, within the neurons, within the neuron, what is called the terminal parts of the neurons also. Okay, that hypercom that up to that extent. But depending upon the nature of injury, you have to prescribe the other drugs also like Ledampal, because with hard objects that crush happens, bruised injury. There also they will have, of course, we also faced it so many times, not in accidents, but we will also have some injuries where there is a bruised injury, you will have lesser sensory activity there. Why arnica works? It develops the heme, actually aids in the reabsorption of blood, extra cellular blood or extra vascular blood. It absorbs, and hypericum there. It raises the nerve activity. Where how that happened? It is the two types of pressures there with that object, blunt object, and with जो blood there जोड़ हुआ वो तो that be actually that also exerts pressure over that nerve. That may be edema or खून, whatever that may be, that also gives pressure. That pressure come होने के लिए hypercom works. There the patient will develop actually the sensory, and in your practice it is arnica. And of course you are telling that you are working in a clinical hospital, rather surgical hospital, I think. So there you need more amounts of arnica, ledampal, hypericum. So Okay, sir. in mother teacher forms as well as in potency forms also. Okay, right, madam? Pammi, I have a Thank you. question. What? Pammi, can I ask a question, Beta? बिल्कुल बिल्कुल Namaste. बिल्कुल सर. Namaste, Sastry sir. Very nice Namaste. lecture. I'm just enjoying your pathological correlation very well. I know the new doctors will have little difficulty in understanding you. Sir, I have a question. Have you got any experiences with the sarcodes? Like, do you use B12, like vitamin D and all in homeopathic medicines, like 1M? Do you No, have no, any no. experience about that? No, 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 you no. don't. Yellow puts actually in our area it is Kakinada, Andhra Pradesh. Actually, those people are those patients who come with allopathic prescriptions. We are not Okay. supposed to stop those supplementations abruptly, because nowadays I already told you, so many prescriptions will have not triptyl added, gabapentin NT, not triptyl. So Yes, that should yes, not yeah. be withdrawn Withdrawn. immediately, Yeah. No, because what I'm asking you, my question is, have you got no, any no, no, experience no. I don't. regarding the I homeopathy? don't prescribe. Okay. Okay. I don't prescribe because our drugs are there. Okay. Like that you have. Califas, and that actually combined with Pix liquida and Pisidia. X These liquida. two drugs, Pisidia and Pix liquida, सर both in and mother tincture ना. no, no, no. It is in potency forms. Okay. So depending So upon the Califos will be in patient's what potency, sir? uh, Califos will be in what potency? Califos will be Califas in what six, potency? I will use all 6x. tissue salts in 6C, Okay. Pix liquida not 6C and PCD in will X be. forms, because in our area, I'm telling my experience only. Our area, patients will come for what is called sweet globules. They don't like what is called tissue salts because they are not sweet in nature. So I will give in Yes, yes, yes. lower one 6C. I don't Yeah, even yeah, yeah. prescribe Even, 3X even, also. So 6C yeah. supplementation will work more than what is called 6 AI in decimal scale. Okay Yes, sir. yes. That I've So seen. Yeah, yeah. I So you have will not used B12 1M and you have not used B12 1M or vitamin C 1M in potentized forms. Ah, another, You, I am actually interfering in your question. Another no, no. feature is So, another Baxen's homeo pharma is there. uh-huh. Bakshi, Dr. Bakshi. Yeah, yeah.
I know him well. He Yeah. introduced B12, all the vitamins in actually in clinical form actually introduced in homeopathic drugs. Yes. And Phil called if what is called FIL, what is called Forts India Limited, allopathy company, Baxan. Mm, All these mm, companies are giving calcium in direct forms. They are mm, asking us to prescribe them. mm. So I don't even go for that one also. In the place of Philcaldi or calcium supplement, I will prescribe Calcarea for 6x, 6C. And for hard nature of anything, that I will go for what is called Calcarea for Floor. 6C floor. Yeah, yeah, yeah. Calculate Uh, floor 60. right. I'm having one case of what is called tumor in abdomen developed from what is called uh, tube, the complete hysterectomy done. And Ah. there, in one case, what is called a tumor occupied after complete hysterectomy, a tumor occupied from some part of tube, fallopian tube left in the right, what is called right side of pelvis. One sort of Mm, tube left, a matter of half centimeter. That actually grown, that became, I will actually send that scan also in WhatsApp to Dr. Pomilaji. That also actually reduced, that actually grown up to nearly 24 centimeters in C oh. shape. Very, very huge growth. Mm, Patient complained vague abdomen pain rather that actually increased like anything. She is residing in Dubai. She is a sister of my patient. So in that I prescribed them what is called, what you told me, that Calcarea floor mm. 6C. Okay. That actually decreased her pain. Measurements very, very in smaller measurements decreased, but not in higher levels. But what is the that pain gone with calcareous tissue supplementation? And I Oh. prescribed then veterinary prescriptions, that is psychotic, what is called psychotic antipsychotic, Tuja. Mm-hmm. In our actually B12 also, Tuja plays major role. It is Ah. a psychotic character, na Tuja. And B12 will have anger spells. Those go for stabbing injuries or Oh. stabbing. They do stab injury. They don't get. So those people need Tuja. Those people need B12. Psychotic persons. Oh. Actually, uh, people will ask like that. Is there any remedy for Yeah, that? Is there remedy like that? They will ask. yeah, yeah. So, it is one way of thinking. Okay. Yeah. Yeah. What is your experience about the pressure effects of any tumor or something that is causing, pressure on the nerves and then causing pain? Pressure effects actually, they in what organ they exert the pressure. Okay, that. So supposing in spine. In spine, there are actually the things comes with before surgery or after surgery, spinal surgery. Okay, in one way, Yeah. and the pressure tumors which exert pressure, Tumor. especially kidneys, perinephric tumor, benign ones. They will exert. Hmm. If they gone, I will ask them whether you have undergone surgery or not. We are not supposed to advise the patients to go for surgery in benign tumor, perinephric growths. Yes. Because if we remove that one surgically, that grows very rapidly like anything. Yes. Very, Yes. very rapidly. Our True. True. drugs, True. tujas or anything, they cannot stop that growth. True. True. Very So, true. Very true. very rapidly, especially in tumors that exerts pressure over what is called a spine. Yeah. Yeah. So, there in which part actually that compressed?
Is it in Okay. root manner or in emerged out from neural foramina and neural canal and where the part actually affected and the paresthesia or hyperesthesia where they're actually affected in his limbs or thighs or only in hip region or only at back. What to observe? If it is only hips, only hip level, Mm. that means waist only will go for collagen. Actually, that is having main affinity over. And if it is from waist to thighs, that means spine to thighs, will go for calicarp because that was up to thighs only. If it is right side or left side, depending upon the mathematical, we have to follow. And if it is up to the foot level, we have to go for the pain is ascending or descending. Ascending means we'll go for Leadenphall, and descending means we'll go for another drug like if it is paralytic type, that means paralysis. Transient paralysis is nothing but paralysis. In those conditions, we'll go for abrotinum or conium and complete descending calmia, mother tincture form, if the limbs actually affected in their contour. That means if the motor part actually affected by compression, what you told me, that compression, there actually happens matter of shortening, actually that will become very lean, that part, or limb. There, Yes. emaciated rather, Emaciation. more Yes, emaciation. emaciation. There, we have to go for what is called emaciation. That level also we have to think. There, emaciation happens. So, that motor part actually compressed. Mm. Motor part will be affected by the B1 deficiency with gray matter compression. So Okay. like that, you have to think in that actually what drugs, actually gray matter, white matter, sensory, motor. Motor drugs are nothing but lilium tick, our motor drugs. Because the patient wants the muscles must work constantly, constantly, constantly. So he loves or she loves working. That actually in that pathology and psychology, both को जोड़ना पड़ता है हमको. And the murex. Murex Okay. is the drug very sensitive. And in those patients who come for us with these symptoms, they don't allow us to touch the part. For example, you have to perform knee jerks or even spinal examination. Even they don't. One female lady came to me. She is a widower. She is having what is called widower from the beginning. That means after 1 month after marriage, she lost her husband. So she doesn't actually undergone not remarried. Okay, in one एक्सक्यूज way. मी सर. And okay, एक्सक्यूज मी सर. सर हमारे पास 3-4 मिनट ही हैं. okay. I प्लीज will आप close it. जल्दी जल्दी. हाँ, नहीं Okay, नहीं, okay. इसका आंसर कर So, दीजिए. so she came for me. She does not allow me to touch her back. Why? Because oh, no, no, no. I won't touch. I don't want to touch it by anybody. So that where I prescribed conium, because in Kent Medica will have that widow remedy conium, not for all us. Conium. Even with using conium, Sphinxes. we don't become widows. Okay, and and the another thing is arnica with only pain. He cannot tolerate the pain or he cannot actually bear the pain. So he doesn't allow anybody, not even the doctor, anybody to touch him or touch that part. In that Um, manner, I will actually come to the clinical conclusion and medicinal conclusion rather in homeopathy as well as in allopathy. very nice, sir. All right. Very सर nice. आपका नॉलेज एकदम से एक्सेलेंट, और हम चाहेंगे आपको दोबारा लेके आना. और जिस तरह से ये मोस्ट इग्नोरेबल पार्ट है हमारे होम्योपैथ्स का, कि हम विटामिन डेफिशिएंसीज पे कभी ध्यान ही नहीं देते. Right. जानने लगते हैं. सर आपका बहुत बहुत थैंक यू. Thank you, madam, giving this opportunity. You have done me a lot happiness to me.
थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। हमारा भी आज बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मेरे को बहुत ज्यादा था कि डायबिटिक न्यूरोपैथी में मिथाइल यूज करना है या किस तरह से साइनो करना है, मिथाइल करना है, वो मेरा क्वेश्चन था बहुत देर से, तो आज क्लियर हो गया। नमस्कार। श्री लक्ष्मी भी बात थे, नमस्कार। राइट। ओके, नमस्कार। थैंक यू Thank you, श्री। sir. थैंक यू, थैंक थैंक यू यू, सर, थैंक थैंक यू सर। मैं नेक्स्ट मंथ फिर लेके आऊंगी आपको, कोशिश करेंगे हम नेक्स्ट मंथ या फरवरी में लेके आए फिर से, और अलाउ करना हमको। ठीक है सर। थैंक हाँ, यू। मैं कंस्ट्रक्शन फील्ड में हूँ अभी। वेरी कोई बात डिफिकल्ट नहीं इस सर, अच्छा कंस्ट्रक्शन, लगा आपसे, कंस्ट्रक्शन। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और राइट, राइट, राइट। थैंक यू मैडम, थैंक यू, Thank you. थैंक यू, Thank you, थैंक यू sir. सो मच सर। Thank you. थैंक यू, थैंक Thank you, Prabhu. थैंक यू लियाकत भाई। यू। साक्षी बंद कर दे बेटा, रिकॉर्डिंग और लाइव बंद करो। हाँ, 1 मिनट, हाँ, बंद कर रही हूँ।